But when you told your parents that you have a girlfriend, what happened? No, so it was bad. So my dad, my dad said nothing. Oh, I'm so horrified. I don't understand. जितने भी वीडियोस में डालता हूँ, every video there is a comment of my parents. Every video there is a comment everywhere. हाँ कुछ भी डाल, कुछ समझा नहीं समझा तो क्या किया जो भी है क्या था क्या जो भी, but every video you will see there is a comment of my mother and my father. They'll always comment. She knew my set because I had been practicing at home. So just before the last 4 jokes, she left because she like वो parking, फिर वो निकलते बहुत भीड़ हो जाती है. तो immediately she was like, I knew when your set was coming to an end, I'll see you at home, beta. And she just left, dude. Frame में आया, audience walking out. Oh, right question for me. Is there a growing need to be a cool parent? You can do a plug-in. Context, I had a show last year called Daddy Cool. Oh. वर्ल्ड टूर अनाउंसमेंट बिफोर द पॉडकास्ट स्टार्ट्स. यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की टिकट्स लाइव हो चुकी हैं tandanamet.com पे. यूएस है फरवरी में और उसके बाद यूके है मई में और सितंबर में हो रहा है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड. tandanamet.com पे आप टिकट्स खरीद सकते हैं. हर जगह नए शोज़ हैं. अगर आप वहाँ रहते हैं तो खुद खरीद लीजिए. अगर आप वहाँ नहीं रहते तो अपने दोस्तों को बता दीजिए. और अब पॉडकास्ट करें. So guys, welcome to चार यार. Again sitting with 3 of the friends. तो 4 दोस्त हम बैठे हुए हैं और टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है आज जो हम बात करने वाले हैं. थोड़ी ट्रोलिंग हो सकती है, थोड़े मैसेजेस आ सकते हैं. ये मत लिखना कि इस पे हंसना था क्या, क्योंकि हर एक बात हंसने वाली नहीं होगी, ठीक है. एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट पेरेंटिंग आवर पेरेंट्स. Okay, because the thing is, with time, the relationship, I think, changes a lot. With parents. There's a very interesting dialogue in this movie called Piku, where Deepika Padukone says that जब माँ बाप 70-75 के हो जाते हैं ना तो वो जिंदा रहते नहीं, उनको जिंदा रखना पड़ता है. Which was मतलब it hits you somewhere. It hits you somewhere because मतलब a lot of ways the relationship has completely changed, where you are now telling them to eat healthy, sleep in time, ये मत खाओ, इसका ध्यान रखो, वॉक के लिए जाओ, जो कुछ पढ़ते हो हर एक चीज पे बिलीव मत किया करो, दोस्तों की बातों में नहीं आना है, right? I'm like, it's the same things that we heard from our parents, now we are telling our parents. So in a lot of ways that relationship changes. I think it might be a global emotion, but whatever relationship we have with our parents, चाहे मार खाई है, चाहे जो भी हुआ है, लड़ाइयाँ भी होती, somewhere we still always crave for some amount of validation from our parents that they are we want to see them be proud of us, which is not easy. No, absolutely not. Yeah. And especially in our generation, it was tougher. I don't know how. I'll tell my story first, and then we'll soon go to the chits. My parents were here a couple of years ago. This happened, and मैं अपने फादर के साथ ना मैंने कहा कि क्योंकि मेरी मम्मी को क्या है, घुटनों की प्रॉब्लम है थोड़ी, तो वो उनको होता है कि मुझे घर पे रहना ज़्यादा. सो आई टोल्ड माई फादर कि डैडी एक काम करता हूँ, चलो अपन दोनों आज चलते हैं कहीं. एंड वी वेंट टू जुहू टू नोवोटेल. नोवोटेल में वो आउटडोर एरिया है, गारालाविडा के बाहर. हाँ, सो वेयर यू सी द बीच, जुहू बीच दिख रहा है तुमको, सनसेट हो रहा है, एंड यू कैन हैव योर ड्रिंक्स. एंड वी वेंट देयर एंड it's a little bit of goosebumps, but we were sitting down and we are having drinks. After one drink, my father said, "यार मजा आ गया, मजा आ गया यार, आज हम पहली बार अकेले निकले हैं." And it hit me so hard. I was 46 और मैं अपने फादर के साथ अकेला कभी ऐसे बैठा ही नहीं हूँ कि it's just the two of us who are out. And मतलब मेरे लिए वो ना मतलब it was like a wake up call कि we've never done this together. And my dad is so happy just having a drink in a good hotel with his son, and he's saying मजा आ गया यार, which is a very rare thing that I've heard from my father. And it मतलब it somehow blew my mind
partly ashamed that why have we never done this? Why have I never taken my dad out alone? Okay. And why did we never like just sit down and, do this, just the two of us, nobody else. And because of that, I took my son next year for a tour. Like I was going to US for one show. I just took him along because uska chutti thi and he was going to Australia after that. And I was like, Amal, aisa karte hain. Tu mere saath chal, apan 13-14 din, we'll just spend alone as father and son. And it was one of the best holidays that I had because of it. So it's emotional start, but that's my story that about parenting, which is one of the things that has happened with me in recent times. Anything that you would like to talk about first? So when I started doing comedy in 2012, so I was the CEO of a company, IT company, and so my parents are there. So my dad, mom was still very apprehensive that ये क्या कर रहा है, ये क्या नया शुरू किया है शाम को, अच्छा खासा काम छोड़ के कहाँ जा रहा है शाम को. इतना तक that my dad told my wife कि ये बॉलीवुड लाइन है, ये बहुत शोबिज़ की लाइन है, कीप एन आई ऑन हिम, आपका हस्बैंड हाथ से चला जाएगा. we had a good laugh about it. And जाओ इसको. It's time. And in 2014 and 2012 I started doing comedy. 2 साल I used to go out, just to see friends उनके बोलने लगे, कुछ clips आने लगे YouTube पे and all that. But they still didn't know what I was doing. I should tell, ये जो कपिल शर्मा आप टीवी देखते हो, मैं वही करता हूँ, लोगों को जाके हंसाता हूँ. But in 2014 I took part in this contest called CEO's Got Talent. And that was the first time I took them. They were watching me first time, and that was a grand stage, like India's Got Talent, CEO's Got Talent, 3 judges, or X Mark, some 800-900 people. Grand Hyatt mein tha, the convention center, and fortunately I won that day. Okay, and I got a standing ovation. और उसमें क्या हुआ? Actually a day I got validation from them for my comedy. Because a lot of people came to my dad. And I remember during the set, my mom had gone to sleep. Okay? Yes. Sorry. Yes. My father had gone to sleep. Yes. And my mom was just happy looking other people clapping, not understanding much kya bol raha hai ye. But the validation, a lot of people came to them and told them that, your son is doing so well and this and that, making people laugh. It's like a doctor's job, whatever. And that day I got some validation from my parents. Why I tell this story is because there are a lot of young kids out there who do comedy. They do a job and do comedy. And a lot of them don't tell their parents about it. So it's very important at a young age also to bring your parents maybe to a comedy show and see what you're doing. Because a lot of parents don't know a new India which is happening. क्या नए jobs आए हैं, professions आए हैं. Because we still think doctor, engineer, CA, a lot of parents of that generation and maybe this generation also. So I think that was my moment that now they know that that what he's doing is a noble job. So that was my moment where my parents saw my thing and yeah. You? Yeah, I mean, Any? think what happened with your father, same thing I experienced once. तो एक बार आए थे यहाँ पे and मैं हमेशा जब कोई मतलब my father is like ऐसे ना कि उनको छोटी भी गिफ्ट उनको दो अच्छा लगता है उनको कोई भी गिफ्ट दो उनको अच्छा लगता है मस्त लगता है. My mom is completely opposite. उनको कितनी भी अच्छी उनको समझते नहीं क्या इसका मैं क्या करूँ बट माय फादर इज नॉट लाइक दैट. फादर को तुम कुछ भी गिफ्ट दो, ही इज वेरी हैप्पी अबाउट इट. तो मैं एक बार उनको ऐसी जस्ट हम लोग मॉल में घूम रहे थे. अभी एक तो मॉल में 2 चीज़ होगी. तो जब मैं घूम रहा था उनके साथ तो उनकी शॉपिंग मैं कर रहा था कि शादी में ये बना एंड वॉट एवर तू जो बोल बस तू बोल ये ठीक लग रहा है, हाँ ये अच्छा ही लगता होगा कि तेरी चॉइस अच्छा. हाँ चलो ठीक है. तो पहने एंड जब हम शॉपिंग करें तो लोग मुझे पहचान रहे वहाँ पे. तो उनको था यार मेरे बेटे को पहचानते इन लोग यार. मॉल में लोग आके फोटो खिंचा रहे हैं इसके साथ. तो ही इज वेरी प्राउड ना. नहीं अच्छा है जो कर रहा है अच्छा कर रहा है मस्त एकदम. एंड उसके बाद हम सब शॉपिंग वॉपिंग हो गई. उसके बाद आई टुक हिम एंड वहाँ पे वो मसाज चेयर्स मॉल में. तो फादर मतलब मेरे फादर ने कभी नहीं किया वो कि मसाज चेयर्स नहीं किया. को मैंने बोला कि आप कर लो मस्त है 10 क्या बोलते क्या होता है 10-15 मिनट बैठो. अब मैं 15 मिनट बैठे एंड उनको मसाज मिला. ही वॉज लाइक कि दिस इज लाइक मतलब ये लाइक सी मतलब उन्होंने कि कभी मॉल में एक तो इन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया और ऐसी चीजें हो सकती है उनको नहीं पता है. माय फादर मदर दे आर लाइक गवर्नमेंट सर्वेंट्स. उनको नहीं पता था. उन्होंने नहीं इतना घूमे हुए जो बट वो जो उनका वो जैसे उठे वहां जा रहे क्या मजा आ गया. दैट्स सेम क्या मजा आ गया ये चीज. हाँ बोलता बस एकदम मजा आया. तो क्या करा क्या मजा. और मम्मी को तरह मसाज करा मस्त. मैंने आपको यही करा अभी और कुछ मशीन से खुश हो गया मेरे फादर. इतने में ही निपट गए गाइस. थाईलैंड जाने की जरूरत नहीं पड़ी.
You being a rebel kid. You know, I'll be honest, I've realized that, you know, in comedy, there are two elements, right? The straight man and the one who does the jokes, the setup and the punchline. To me, I've realized in life and in my career, my greatest two players are my father and my mother. I don't think I would be the way I am if it were not for both of them. They're both hilarious, okay? Like, I feel like my dad brought me up sarcastically, okay? He used to have a back scratcher. So one day I'm, talking to him and I'm banging the back scratcher on the table. And I'm, saying something and I'm talking to him, tat karke. He stops. ऐसा Aditi, ये क्या हुआ? So I'm like, मतलब, सीधे कि आप इतने lightly क्यों कर रहे हो? इतने lightly करोगे तो टूटेगा नहीं तो आपका objective कैसे पता? जोर से मारो. And I'm like, huh? But he always had, and he just, I don't know, you know what? I think also my dad trusted my intelligence a lot more than I still trust my intelligence. Where he just was like, oh, you know, you're a smart, intelligent person and you're funny and you're like, you know, lively. And I remember my first open mic I was doing a joke about ki, dekho, my dad is so Punjabi, he doesn't say bears, he says beers. And so the bedtime story he tells me is very different, where he says it's Goldilocks and the 3 beers. कि वो बेचारी गोल्डीलॉक्स गई घर के अंदर, उसने पॉरेज खाया, फिर 3 बियर पी ली और फिर वो पंजाबियों की तरह बेड पे लेट गई. Obviously the beer started all the problem, right? And I remember telling this joke for the first open mic I ever did. And then I did some bits about ki like, oh, you know, मैं dieting कर रही हूँ, or some nonsense like that. That opening joke was the only thing that got a laugh. And I went to him, I said, Papa, you know, that thing got a laugh. And he's like, obviously. He will not care. Dude, he would come for all my show. Every single one of my shows. That's so I mean, he loved you. I don't know, had a thing for like short men, I think. Because he was absolutely obsessed with Atul Khatri and Abish Mathew, okay? He's like, ye do, itne chote, itne mazedar. He's like, chote packet mein itna maza. He used to come for every single show and then be like, मेरे 2 ticket रखो, फिर 2 ticket रखो, then तीसरी रो में बैठ के सो जाते थे. So I'm like, Papa, what are you doing? He's like, नहीं, मैंने कल देखा था ना. ऐसे पापा तो मत सोना मेरे ऑडियंस में, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? You're the biggest troll I've ever had. He's like, तुम बच्चों को पता नहीं, you know, हमारे ज़माने में एसी नहीं हुआ करता था, यहाँ पे एसी भी है, इट्स नाइस एंड डार्क ऑल्सो, सुनी सुनाई बातें मतलब सुनने को मिल रही हैं तो आंख लग जाती ना बेटा. I was like, please. But just like, my mother came for my first Netflix special ka taping. Sorry, I'm just like this thing. But like, my mother came for my first Netflix special ka taping. I told my manager, I said, fine, mama, nice seat and all. When we were going to take audience shots, I said, can we take shots of my mother and all? After the show, I go to my manager. I'm like, listen, my mother, you know, did we get shots and all? She's like, she left. So I'm like, wait, what? Like, so wait, she got up in the middle of the show and left like that. She's like, no, what happened is when they told her, hey, why don't you get a front seat? She said, no, I'll sit at the back. Nobody knew why the fuck she wanted to sit at the back. She's like, she knew my set because I had been practicing at home. So just before the last 4 jokes, she left because she's like, वो parking, फिर वो निकलते बहुत भीड़ हो जाती है. So immediately she was like, I knew when your set was coming to an end, I'll see you at home, beta. And she just left, dude. Frame में है, audience walking out. Right. But मेरा तो मतलब एक तो about your father sitting in the audience, I think, you know, from a father's perspective, because now I have an 18-year-old daughter also, is probably, you know, one of those things where you want to see your kid, okay, on stage, you want to be supportive, पर आदमी थका भी हुआ है. And at the same time, sometimes, you know, they'll not say it, but sometimes they might be worried कि show करने जा रही है, वहाँ कोई कुछ बोले ना, तो if I'm around, maybe I can take care of something. Is another thing. He'll probably never say, but it could be there. और मेरा तो ये था कि like your dad believed that, you know, you are intelligent. My mom believed I'm dumb. क्योंकि मेरे साथ हुआ है, मेरे को तो बचपन में ऐसे, this is something that I remember. हम 2 भाई, मेरा बड़ा भाई है, मैं छोटा हूँ, and हम लड़ रहे हैं कि पहली रोटी मैं खाऊंगा, you know, the typical stupid fights. And my mom, उन्होंने रोटी मेरे brother को दी, and I am crying, and my mother said, पहली रोटी ना मैंने अभी बनाई नहीं है.
and I'm happy. Genius. That's genius. So my sense of humor partly I think comes from my mom. That's of course it It's does. Genius. पहली रोटी तो मैंने अभी बनाई नहीं है एंड आई एम हैप्पी लाइक 6-year-old किड के हो बेवकूफ वो दूसरी रोटी लेके गया है पहली तो अभी बनी नहीं है Amazing. Amazing. लेट्स डू द चिट्स अतुल सर आप स्टार्ट करो Oh, yeah. Oh, right question for me. Is there a growing need to be a cool parent? You Just can to do a put the plug-in. context, yeah, I had a show last year called Daddy Cool. Oh. No, I don't think there is like a pressure for you to be like a cool parent. I mean, I have never taken that pressure of being a cool parent, but I just felt He's that like he's naturally cool. Huh? no, matlab, Naturally being cool. I was like, I used to like pop culture. I like watch Game of Thrones. वो तो मतलब ऐसे था बचपन से I used to love Superman and that. So it was not which came that I like started watching these heroes so that to just fit in. But I think no, I don't think there was never a reason for me to be to But be he's like been a cool dad that much. Yeah, he has. You I'm always like this. पहले से ही था मतलब cool. हाँ. वैसे ही तो कोई मेरे बच्चों को कुछ ऐसा कुछ ये नहीं लगता है. I think your coolness will be tested once your daughter is 14. Speaking from experience. अभी 8 है 6 साल है और 6 साल हाँ अभी है हाँ. but do you ever like consciously do things which you are not too sure but you're like नहीं अभी आज की डेट में नहीं करूँगा तो नहीं ऐसा नहीं है ऐसा बिकॉज अगेन आई फील कि मतलब कूलनेस तो मेरी हमेशा रहती है कि लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू बिकॉज आई एम डूइंग समथिंग व्हिच आई लव टू डू माय पेरेंट्स टोल्ड मी कि डेंटिस्ट्री करो ये करो तो इसका था ही नहीं कभी लेकिन बट आई स्विच्ड माय करियर्स एंड जब मैंने वो 2020 में जब आई डिड दैट उसके बाद मेरे लिए कि नहीं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर वो करो जो मजा आता है तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी लगने लगती है सो आई ऑलवेज टेल माय वाइफ आल्सो माय किड्स आल्सो कि नहीं लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू एंड पढ़ाई वढ़ाई होती रहती है कोई so Aditi are you a cool parent to your dog? Honestly, yes, I am. Do you let him or her? Both of them. I have two. Oh, I have a him and a her. do what they want to do. Honestly, like I'm realizing now that I did not adopt dogs. The dogs adopted me. Okay. Yeah. हम बस उनके मतलब वेटर की तरह उनको दिन में 2 बार खाना देते हैं और फिर we have to just every time we pass by them we have to play with them. नहीं तो फिर वो मतलब like I right now actually have a bruise around my eye because मैं चश्मा पहनी हुई थी and I entered the house and one of them just flew up from the sofa into my face. तो मेरा चश्मा मेरे मुंह के अंदर धस गया है. I also constantly have like like light scratches on my chest because they're like trying to get up. They're terribly behaved. So am I a cool parent to my dogs? I'm cool to my dogs. I'm a horrible parent to my dogs. That's what I am. So if they pursue stand up, will you let them? Like that you're saying. Will I let them follow their passion? Yes, because currently both my dogs are unemployed. They do nothing around the house. They don't pay to be there. They can't open the door. They can't wait for a parcel. I think Okay. I would allow them. What would you, Amit? हाँ मेरा देखो I think with time it has changed a lot. I've become way more accepting to a lot of things which I would not have been had I not gotten into comedy. Yeah. Or probably moved cities. So exposure and travel changes you a lot. It improves your perspective a lot. So honestly, maybe I was way more conservative 10 years ago than what I am today. So I try to be free with my kids. So we would talk about everything, for example, at home. A lot of times I've done that consciously also because I'm like, नहीं करेंगे तो it's like I'll give you a small example about for example periods. So it's पहले होता था तबीयत खराब है. So I said periods है. Let's not say तबीयत खराब क्या like it's a normal thing. So let's just normalize it. Let's just talk about it at home. So Sanvi, if you have to say you have periods, you say you have periods. Okay, you don't like कि तबीयत खराब है स्विमिंग नहीं जा सकते क्योंकि तबीयत अरे नहीं है यार तबीयत खराब हो इट इज periods and you should not be shameful of talking about that. And we started joking about these things at home, which I did a little consciously so that
they are okay talking about such stuff openly in front of us rather than कि ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते, is something that I've done, which I might not have done had I stayed in the profession that I was in, if I had that circle. It's happened a lot because of comedy. Having said that, you are still a little more conscious when it's your daughter versus your son. Okay. There is that difference. As a father, I completely accept it. So, for example, if she's going to Delhi, and if she's in Delhi and she's going to a mall, I want to ensure that you wear the right kind of clothes because I know the kind of people who come in there. Okay? That as a parent, it might sound a little conservative, ki let her wear. But the thing is, I can't change the people around that area. I know what can happen. Okay. So rather than saying that everybody change because she has to do, I know it is not immediately happening. Okay. She wants to wear whatever she wants to wear. In Mumbai, she wants to wear whatever she wants to wear. She can wear. I never have a problem. किस टाइम आ रही है रात को 2 बजे आ रही है 2:30 बजे आ रही है she's with friends, she's doing all of that. I'm okay with it. But when she's in a place where I think something, I would add a word of caution. बेटा ध्यान रखना. बेटा ध्यान रखना. जैसे now she's studying in UK, your daughter is studying in UK. They also had an incident. You know, similar to what you were talking about earlier. You know, okay, there was a fight that happened, after and a similar fight happened. You know, where my daughter was studying, and some racist, approached this group of friends, and there's a proper fight happened. Police came in and all of that. So I just want to ensure that you keep your eyes and ears open. You know, can I say, as a daughter, is that this, like, my mother also has been very conservative about when she says, be careful. And in Bombay, she will never tell me, कि like, जो भी पहन के जाओ, Bombay, there are people much worse dressed than you on the streets. जाओ बेटा, जैसे भी जाना है. But, you know, she has like given me, been like, hey, listen, just watch what you're wearing when you're in XYZ situation. And I'll tell you, as a kid, or as her daughter, I now appreciate that she only tells me in situations where she knows that it might be like something to be watchful for. And it makes me realize that she's doing it to protect me. She get, वही होता ना कि because initially the fight would be, कि excuse me, how can you tell me what to wear? What about my freedom of expression? She's like, मेरे को तेरे freedom of expression से कोई मतलब नहीं है. मेरे को, I'm worried about other people's expression on your expression. You know, and that is something we can't have control over. I'm a single mother. You know, I cannot change the world, but I can make sure that nothing happens to you. And so I understand that impulse. तो वो दूसरा वही प्रिंसिपल मेरे को होता है कि अगर रोज टोकोगे तो टोकने की वैल्यू खत्म हो जाएगी. हाँ, करेक्ट. जो एक और टिपिकल पहले वाले जनरेशन में रहा है ना कि हर एक चीज में ये क्या पहना हुआ है, कहाँ जा रहे हो, कितने बजे आओगे, नहीं, हर चीज का लाइक डिफॉल्ट वाज नो. तो देन आई थिंक यू स्टॉप लिसनिंग टू दैट. बट अगर मैं 2 हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार किसी चीज के लिए रोक रहा हूँ, they'll be like, हाँ कोई रीजन होगा. Yeah. You listen twice. You're like, why is this person saying this? Second chit, ले भी तू उठा. ले. Do you think our parents understand the concept of privacy? I think actually my mom doesn't understand it. But having said that, I think there's an Indian quality of parents, and I've had it with both my dad and my mom, is when you walk into the house with a hickey at 4 in the morning. Where did you go? I went out with Sarita. Okay. They know you've had a drink. They know you have a hickey. They'll be like, okay, go to sleep. And there is that like level of things we don't talk about, which I feel like has been a constant with the previous generation, the generation before that, where they're like, these young people with your young idiotic things, go be young. Otherwise my mother's sex education was, see, if whatever I tell you will be less than what you already know from TV. Absolutely. Just do me a favor. Don't come with a big belly and say, Mummy, I want to keep it. This was my mother's sex education advice to me, okay?
It's insane. Privacy wise, I think वो actually है क्या? It's a thing about upbringing. We one thing I always say, we can't judge our parents on the basis of current environment, because they were brought up in a different environment. When you've grown up in one room house, okay, where there was 7 people, 8 people, there was no concept of privacy. Everything was open. So for them, it takes a while, to understand that ये हाँ. उसकी चीज है, let them, yeah. हाँ, लाइक अब हम वो अलग लेवल पे आ गए कि जी अब तो अटैच बाथरूम वाले कमरे हैं. Which Yeah. I was talking to somebody कि अटैच बाथरूम for me was a very big deal कि घर अब हमारे घर में हमारे कमरे के साथ अटैच बाथरूम है. Yeah. मास्टर बेडरूम. Yeah. पहले वो कॉन्सेप्ट ही नहीं थे, तो प्राइवेसी वाले तो हाँ वो थोड़ा इशू रहता है कभी कभी. माई बिगर प्रॉब्लम इज व्हेन माई मॉम इज फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम एंड शील बी लाइक, अच्छा तो कल हैदराबाद जा रहा है. All of that becomes a bit of like she knows everywhere that I'm going. I did bungee jumping in New Zealand and I did it. I came back and I get a call from, कहाँ से कूद रहा था तू? Because I put up one story. तेरा दिमाग खराब है, अकेला क्या वहां जाकर कूद रहा है ऊपर से नीचे. अगर कुछ भी हो जाता तो अब नहीं मम्मी वो प्रॉपर रस्सी बांधे. मैं न्यूजीलैंड में बैठ के डांट खा रहा हूँ मम्मी से कि कहीं से भी कूद रहे. Your wife has outsourced the job to your mother. कहाँ जा रहे हो, कल हैदराबाद जा रहे हो, क्या कर रहे हो? And the other, this is a conspiracy. I've seen कि अब सोनल ने ना डैडी को खास करके डैडी की और सोनल की बनती है, बिकॉज दे both of them agree on this point कि इस आदमी को पैसे संभालने नहीं आते. Yeah. Amazing. इसको कोई भी लूट के ले जाएगा, इसको पता भी नहीं चलेगा, ये तो पैसे फूकने के लिए एक बैठा है. इंसिडेंट हुआ होगा, उस पे बेसिस पे हाँ, so when they have to talk about money, they talk with Sonal. कि तू आ बेटा, मैं तेरे को बता दूं, ये वाले वो चेक दिया था, ये उसका है, ये इंश्योरेंस के है. एंड आई एम राइट है. मनी मुझे पैदा तो किसको किया है? इसको नहीं पैदा पता किसको होगा. किया? हाँ, इसको ध्यान नहीं रहेगा, ये भूल जाएगा. तू सुन, तू लिख ले सारा कुछ. So that's something that has happened. But yeah, coming back to privacy, yes, this issue is like what happened recently was somebody made an account with the name of Sonal Gera __20. तो किसी ने सोनल का अकाउंट बना दिया, सेम एक आधा अंडरस्कोर डाल के, ठीक है, एक्स्ट्रा वो बना दिया अकाउंट. 3-4 दिन पहले की बात है. एंड स्टार्टेड सेंडिंग फ्रेंड रिक्वेस्ट एंड देन स्टार्टेड मैसेजिंग पीपल दैट आई नीड मनी रेगुलर. सो सोनल ने क्या किया, उसका एक तो उसको ब्लॉक करा, हमने रिपोर्ट करा. एंड देन सोनल ने हमारे फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया कि माय अकाउंट हैज बीन हैक्ड, सो प्लीज बी केयरफुल. येस्टरडे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय फादर, लाइक ओ सारा कुछ ठीक हो गया? मैं कहा क्यों? ਉਹ तेरी मम्मी फोन भी नहीं करन दे रही, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ हैक ਹੋਇਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਾਲ करना ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. एंड आई एम लाइक अकाउंट इंस्टाग्राम का हैक हुआ है, बैंक का नहीं हुआ है. So for them, account hacked, they went. Parents are such. But they, हाँ, and they follow everything. They follow everything. कहाँ, अच्छा ये यहाँ गया, अच्छा फिर कहाँ गया, फिर वो वही किधर है? प्राइवेसी पर अभी थोड़ा गड़बड़ हो गया. So the first question is कहाँ पे है? And you can't like explain everything. It's because like explaining is very tough. When I, for example, if I'm talking to my father, yesterday when I was talking, like क्या वो पहले फोन नहीं उठाया, मैं कहा वो शूट चल रहा था. किस चीज का शूट चल रहा था? चैट शो किस चीज का है? अब मैं क्या बताऊं कि चैट शो है. अच्छा कहाँ आएगा वो? अच्छा YouTube. तो उसका फायदा क्या हुआ? तू पैसे खर्च ही जा रहा है ऐसे. एंड इट्स Dad doing the budgeting for such the a show. tough. अंकल जी हमें पैसे नहीं मिल रहे. कौन कर रहे हैं? पैसे इनको भी नहीं दिए. उड़ा रहा है डैडी पैसे मेरे और किसी को का. पैसे नहीं हमारे दिए. अकाउंट पे और किसी पैसे हाँ. उड़ा रहा है. ये जो कैमरे के पीछे वाले उनको मिले हुए पैसे. कुछ ना कुछ कर लेंगे हम. बट so that discussion is very tough because there's like question after question after question after question because like इसके बस का तो है नहीं पैसे संभालना. कहीं ना कहीं फूक रहा होगा, कुछ ना कुछ कर रहा होगा. The thing and the detailing that they go to कि किसका like if I'm doing a corporate show, कि किसका शो है? ICICI का. अच्छा कहाँ पे? गोवा में. तो कौन गोवा में, मतलब क्या उनके सारे सीनियर वाले आए?
how do I explain and what will you do with that information is like. Can I tell one story of how my dad used this very cleverly? Is when my Netflix special came out, he was calling all his friends, being like, "ये Netflix क्या है?" Because Netflix had just launched in the Indian market, so he's calling people, "ये Netflix क्या है?" And then people are like, "अरे Tony, why do you want to know what Netflix is? Oh, अद्दू का शो आ रहा है ना, तो आपको तो जरूर देखना चाहिए, लेकिन ये Netflix क्या है?" When he passed away, I got like 60 messages from random friends of his being like, Adhu, you know, he was so proud of you because I was the one to tell him what Netflix is. I was like, oh my God, about 60 people told him what Netflix is. So he could promote my show to them. प्राइवेसी तो मतलब एज यू सेड लाइक यू नो बिकॉज वी हैव वही एक 1 बेडरूम हॉल में जब ग्रो हो रहे हैं तो फिर मतलब कहाँ की प्राइवेसी होगी. मुझे लगता है कि मेरी मतलब ये माँ जब तक माँ होती तो प्राइवेसी मिलती है, सास बनती तो प्राइवेसी नहीं मिलती थोड़ी. Hilarious. I would like you to repeat this. Like, can you please repeat what you just said? Hilarious. This is such a great point. Please say this again, more clearly, louder. My wife will be very proud. कि चलो जो मैंने सिखाया इसको बोल के आया मैं. हाँ नहीं, say exactly what you said. So जब तक माँ होती है तब तक प्राइवेसी मिलती है, जब सास बन जाती है तो पता नहीं प्राइवेसी कहाँ चली जाती है. This is. फिर वो जो डोर पे नॉक्स होते हैं टक 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 टक. अरे तो ये हुआ है मतलब तो ठीक है अभी क्या मतलब. बट फिर उनको समझाना पड़ता है कि बिकॉज अगेन ऐसा भी था बिकॉज इन माई हाउस लाइक मॉम डैड मी एंड माई एल्डर ब्रदर. तो ये वही ना कि लड़की कभी घर पे थी नहीं, कोई फीमेल वाज नेवर देयर. तो अभी वो कैसे फीमेल के साथ डील करे, इवन माय फादर माय मदर, तो उनके लिए थोड़ा सा था. बट ठीक है फाइनली लाइक नाउ एवरीथिंग इज सेटल्ड. Sir. So I'll talk about privacy with my daughters. Like, you know, so they are, my elder daughter is now 30, younger one is 26. So right from beginning, luckily, like also thanks to comedy, as you said, you're learning, you're de-learning, learning a lot. So I think early in my, like I came to know, give them their space. Like we have some few rules at home, कि जब भी जा रहे हो, like that's even for me, if I come in the night, we have to share the Uber ride on the family WhatsApp group, just to know where everybody is. Like my daughter's in the UK, even when she's partying there, she'll say I'm going out for partying. So she'll come back and at 6 o'clock I wake up, she's still partying because it's 12:31 over there, you know. And at 7:38 she said I've come home, you know, from partying. So एक हमारा एक rule है just so that basic safety because people you know are here and there. But ऐसे कुछ ऐसे not really we are, you know, going like I think जो एक earlier था like how I think my kids found me cool. Like my first daughter had a boyfriend, she told me first before she told my wife. Oh. Because maybe I was the, you know, slightly cooler one, or she thought कि maybe he can take it. मॉम को बोलेगी तो डांट पड़ेगी कि पढ़ाई कर रही है, ये कर रही है, वो कर. बट शी टोल्ड मी फर्स्ट अबाउट इट. ऑब्वियसली वाइफ को पता है बाद में तो डांट पड़ी. But when you told your parents that you have a girlfriend, what happened? No, so it was bad. So my dad, my dad said nothing. How can I have a girlfriend? I don't understand. Because my dad always felt that I should have an arranged marriage. My parents, I have not said dad, parents. So when I told them I have a Punjabi girlfriend, which is not to tell the Sindhi, I'm a Sindhi. As his name, we are just classier Punjabis, basically, you know. Aditi, high five. हम दोनों पंजाबी हैं यहाँ. Half and half by I mean, half Sindhi Yeah, So anyway, so thoda. So you're half Punjabi, half Sindhi. Yeah. I am pure Punjabi. So I'm pure Sindhi. So anyway, so वो था तो that they got a shock कि नहीं you have to do arrange, ये तो क्या है and things like that. तो actually I went through like 1.5 years where they at least 1 year they didn't speak to me at home. Oh. Thinking, and they used a lot of tactics like telling my brother-in-law to talk to me, get away from this and that. Because somewhere in my young I would have promised my dad that I'll get arranged marriage. Oh. तो डैड ने बोला तेरी शादी, because my elder brother had a love marriage. तो मेरे डैड को मेरे होप थी कि तू लव मैरिज नहीं करेगा तो अरेंज करेगा. तो ऐसे हाँ मैं करूँगा, कभी के यंग था तो आज बोलने में क्या But then I think after a year or so they sort of reconciled to the fact and And also because I think ये जो हुआ ना बाद में कि ये बहुत मतलब बोलना उनको कि I need my own space, उनको समझता नहीं होला ये क्या है मतलब स्पेस. ओन स्पेस क्या होता है? ओन स्पेस क्या होता है मतलब उसका उससे क्या करना ओन स्पेस. But parents also, like I remember my mom in the Sindhi community, she did a lot of marriages, arranged marriages. इसकी लड़की उसके साथ, you know.
बट जहाँ जहाँ अरेंज मैरिज की ना सब मेजर फ्लॉप हो गई, मतलब डिवोर्सेस एंड ऑल. सो आफ्टर दैट शी एडवोकेटेड दैट आप लव करो, अरेंज मत करो, खुद चूज करो, ये करो, लेकिन हमसे मत करो, बिकॉज देन व्हेन द जब डिवोर्स भी होता है दे गेट इन्वॉल्व बिकॉज उन्होंने शादी करवाई थी. सो दे वेंट थ्रू हेल देमसेल्व्स थ्रू दैट प्रोसेस. अरेंज मैरिज करो तो I heard a great story like this, very similar to this. So a friend of mine, she had an arranged marriage with a guy from a very conservative community. Okay, not intercaste, not interreligion, inter-community, like a different community, different state, and they were very conservative, and they were dead against him getting married to her. Both of them were working. They fell in love when they were studying. And शादी हुई and her mother-in-law was like so disappointed. She would not talk to her. जब भी वो आएंगे तो उनसे बात नहीं करी, बेटे को खाना खिला रही, उसको खिला भी नहीं रही है वो, तो खुद बना के खाओ, वो वाला like एकता कपूर level cruelty. हाँ प्रॉपर वो. And then she said कि मैं अपने छोटे बेटे की तो शादी कम्युनिटी में ही करूँगी. Then the छोटा बेटा got married within the community, and that bahu gave her such a horrible time. कि she said, अब मेरी सास मेरे साथ इतने प्यार से रहती है ना कि यही अच्छी है. मुझे खाना देती है. चलो नेक्स्ट इट. How much of role reversal has happened with parents? Parenting the parents, which we were talking about in the beginning. तो ये मतलब कुछ valid नहीं है क्वेश्चन. नहीं वैलिड है. हाँ. Has it happened with you कि अब वो बच्चों वाला थोड़ा हो जाता है कि like I have seen that happening कि पेरेंट्स थोड़े बच्चे बनते जाते हैं. Happened with you? नहीं, बट वही मतलब अभी एज दे ग्रो ओल्ड तो फिर वही है ना कि उनको फिर बोलना पड़ता है कि क्या करना है. जैसे स्पेशली मेरा हमेशा आर्गुमेंट्स होते हैं उनके विद रिस्पेक्ट टू देयर हेल्थ. हाँ. बिकॉज एक तो वो हेल्थ के लिए, एक तो ये उनकी दवाइयाँ होती है, फिर ये दवाई देखना, वो दवाई देखना. और वो जो है ना डार्विन सिंह, बच्चा होता है, बर करके वापस बच्चा बन जाता है. दैट हैपेंस, दैट इज हैपनिंग. वी कैन सी दैट. नॉर्मल. फिर अगेन उनके वो देखना कि कौन सा डॉक्टर अच्छा है, उस डॉक्टर के गूगल रिव्यूज क्या है. Nice. है ना, मैंने ये चेक किया है, ये तू देख लेना, अपॉइंटमेंट ले लेना, ये वो. तो फिर उनको हमेशा बोलना कि टेक केयर. बस उस पे आर्गुमेंट्स होते हैं, लाइक वही पेरेंटिंग. बाकी तो कितना भी कुछ भी हो जाए वो तो आपके माँ बाप है ही. तो कितने भी आप बड़े बन जाए, आप छोटे हो उनके लिए. तो मेरा कभी ऐसा रोल रिवर्सल नहीं हुआ, बस only for that. Like just 2 days back, my dad, he's very old. He's 87. He's like on wheelchair and he's on tracheostomy. So right now, like he eats whatever, खाते बराबर, and we just feed him whatever he likes. We give him. So उस दिन रसगुल्ले थे घर पे. He likes to eat मीठा after every meal. So that day rasgulla came. He told that guy, take it back, and he can't speak. So he took a paper and he wrote, no rasgulla, get for me rasmalai. Okay. Nice. Good choice. Yeah. मैं अपनी वाइफ को बोला, ये घर है कि तिवारी है क्या रसगुल्ला नहीं रसमलाई कहाँ से आएगी. My wife said shut up and she ordered on Swiggy. 10 मिनट में आ गई रसमलाई. But it's like those kind of thing. ये नहीं चाहिए मुझे. Yeah, bring the other food. They're getting into children. Like बच्चे बोलेंगे मैं ये नहीं खाना, मुझे वो खाना. It's exactly like that. My mother has the most annoying habit in the world is where she will take regular shoes like this and then wear them with the thing like this. Okay. Oh, okay. Like this. Okay, I cannot tell you. I have spent so much of my youth being like, "Mummy, ढंग से पहन लो ना. Why not? Why not? Why not?" And she's like, "I like it like this. Now that back part is stuck only like this." I was like, "Mama, please just wear it properly. अगर मतलब गिर पड़ जाओगे तो क्या होगा? गिरेगा कौन? मैं ना. तेरे को क्या?" I'm like, okay. But this one thing she will never, as a, like a 4th standard kid who has just come out of this thing, she's wearing it like that and roaming around. Yeah. मेरी और मेरे फादर की बहुत लड़ाई होती है. ऐसी चीज़ों पे इतनी लड़ाई होती है. And like sometimes I just lose it when he's trying to be very stingy. क्योंकि उन्हें पैसे खर्च करने नहीं है ढंग से. Yaar, what do we do? So this is a problem. Like, please, solution suggest, listeners. I'll tell you, true story. 50th anniversary है, ठीक है. We all flew down from Mumbai. My chacha ji had come over there. 50-60 people coming in. तो मेरे फादर को था कि 50th anniversary यार बढ़िया मनानी है. पर चक्कर क्या होता है, जब बिल आता है ना सामने तो उनको तो नहीं यार छोड़ो. हैं? So now, and his friends, his friends somewhere said कि वो वरमाला करेंगे दोबारा, ठीक है. ऑर्चिड्स की वरमाला बहुत चल रही है आजकल, ठीक है. One that, so he said यार राजू, आजकल वो मेरा दोस्त कह रहा है
ऑर्चिड्स दी वरमाला बहुत चलती है, बहुत अच्छी होती है, बहुत सोहनी होती है. मैं अच्छा डैडी मैं वो ऑर्डर कर देता हूँ. ठीक है, मैं आई वेंट टू द फ्लावर शॉप, आई सेड ऑर्चिड की वरमाला बना दोगे? कह रहे हाँ जी शाम तक मिल जाएगी. ठीक है, एंड इट वाज आई थिंक 5,000 रुपीज़ और 6,000 रुपीज़ समथिंग. देन in the evening they are getting ready, okay, for the and this is supposed to be a big party, yeah? And डैडी आए, डैडी अपने जूते पहने, मैंने देखा जूते में ना नीचे यहाँ पैच है एंड यहाँ भी एक छोटा सा पैच है. थे तो हश पपीज बट पैच, एंड आई कंप्लीटली लॉस्ट इट. लाइक वन ऑफ दोज रिवर्स मोमेंट्स वेयर लाइक क्या पहन रहे हो आप, यू नो, what are you wearing? This is your anniversary. How can you wear this? Like, you know, partly like I should not completely lose it, but I know otherwise he doesn't listen to me also. कि नहीं सुनेंगे. And like, ओ यार नहीं दिख नहीं रहे, वो कुछ नहीं पता चल रहा, कुछ नहीं पता. I'm like, मैं नहीं जा रहा अगर आपको ये पहन के जाना है. Like you literally had to do. So 8 o'clock you are supposed to reach. 7:15 I took him to Bata shop. वहाँ से हश पपीज नए लेके दिए. एंड देयर ऑल्सो आई एम सेइंग कि एक लेसेस वाले ले लो, एक स्लिप ऑन्स ले लो. स्लिप ऑन्स भी आपको आसान रहेंगे. अरे एक ही लेते हैं, मैं तो बाद में आके लूंगा दूसरे, बाद में आके, मेरे को पता नहीं लेने इन्होंने दूसरे, एक तो वो नहीं. एंड देन सेकेंड व्हाट he did was, you know, we picked up the वरमाला while coming back. जूते खरीद के दिए, वापस ही मैं वरमाला ले रहा हूँ. एंड he said कितने की पड़ी? मैं कार में बैठ रहा हूँ, he is sitting there next to me. I got the box and अच्छा मेरे से ना ऐसे नहीं होता कि मैं बिल्कुल टाल दूँ. पहले तो मैंने बोला, मैं कहा कि छोड़ो जो भी है, मैं कौन था आपसे पैसे मांगा. नहीं कितने की पड़ी? मैं 6,000 की. 6,000 दे, 6,000 की फूल वापस कर क्या उसको बोल रहने दे, हम दूसरी वाले. मैं डैडी बनवाए हैं. एंड आई एक्चुअली जोक्ड अबाउट इट, यू नो, व्हेन द एनिवर्सरी वाज हैपनिंग. उनको वरमाला, मैं कहा इस आदमी ने ना उतनी कमीज नहीं पहनी जितने की वरमाला पहनी इन्होंने आज. एंड दैट ही वांटेड मी टू लाइक, वो जिद पे अड़ जाए, करनी क्या है, करनी क्या है. तो दैट टाइम लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक चुपचाप ये पहन लो. वो जो होता है ना, that parenting that you have to do with them sometimes. Like I don't stop them from eating because I figured out उसका कोई फायदा नहीं है. अब वो हमसे दूर रहते हैं, ठीक है, कितने 2 दिन रोक लूंगा, इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही रोकूंगा. ये होता है कि अपना लाइक माई मदर, दैट अदर थिंग दैट वी डू विद आवर किड्स, की दोस्तों की बातों में नहीं आना. घुटनों के रोज नया तेल सुन के आ जाते हैं कि वो बता रही थी ये वाला तेल लगा लो, फिर अब ये वाला तेल लगा लो, ये अदरक मल लो. रोज की रोज डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, बट दोस्तों की बातों में आ रहे. पूरे के पूरे भाजी का डब्बा यहाँ पे, मतलब now the latest one is CBD oil. So now CBD oil आ रहा है. And so my mother walks around smelling like a pot dispensary because यहाँ पे CBD oil. A lot of parenting is happening now. There's a lot of parenting that happens at my home. It's, you know, whether it's around their medicine or you know, I feel like my mother doesn't respect me enough to be parented. Nobody's parents respect them enough. Okay, ये तुम्हें सारी उम्र लगेगा. What are the most common arguments you have with your parents? I've just spoken about it. They're not spending money. So is also one of them. You know, she like health-wise, right? So she started working out. I used to have this trainer called Mahesh sir who used to come to my house and do like morning training and all that stuff. So one day she passes by, she's like, "Ye kya chal raha hai? Meko bhi karni hai." And then she becomes very friendly with Mahesh sir, and she starts training under Mahesh sir. Now Mahesh sir is training Kareena Kapoor and like people, important people, okay? So now I'm like, Mama, you know, my sir doesn't have time for us, but you still need to work out. And so let's get you a new workout instructor who will come and teach you and all. नहीं करना है मेरे को, नहीं करना, बहुत महंगा हो जाता है, बहुत महंगा. ऐसे क्या करोगे? इतने पैसे जो आपने बनाए हैं, जिंदगी भर इकट्ठे करके रखे हैं. She has not bought an original branded thing in her life. Our house is Adibas. Instead of Karwa ka radio, we'll get Marwa ka radio. We'll get Adibas. We've got Pumba. We've got everything because she's like, "मैं नहीं खरीद रही महंगी चीज." And that I think is one of our biggest arguments. Even though I tell her like how much I'm spending on a thing, my number is 3, so that I remember the lies I tell. So if it's like a thing that's in hundreds, right? If it's a 700 rupee thing, I'll say it's 400. Or if it's a 7,000 rupee thing, I'll say it's 4,000. So I can remember it if she brings it up again next time.
No, I think what parents get irritated most today, especially my dad is very senior, is like, full family is there और सब अपने phone पे लगे हुए हैं, and that's I think a lot of irritation point कि यार तुम leave the phone alone, spend the moment, and that's a fault which I think we have to accept, क्योंकि हम इतना साला phone में घुस गए हैं ना, that day I saw the dinner table, we are all having dinner together, but somehow we are all on the bloody phone, और सबका important ही है, कोई ऐसे कोई फालतू का कुछ काम नहीं कर रहा है. This shoot has been the longest I've been without my phone today. Yeah. So I think that is a thing which parents should, parents really find it very irritating because they have not seen that generation of phone के सब क्या घुसे है तुम लोग, क्या तुम लोग का इतना है, yeah. Obviously, खर्चा भी दूसरा. I also lie a lot like I don't have this good. You gave me that 3,000, 3 less. So they're always कम ही बताओ, ज़्यादा बताओ ही मत. Please, if there are any parents watching this, spend your money. Spend it. I swear your kids are really not worth leaving it behind for. Spend it. Like my father would tell me, like if I'll carry whiskey, like my father likes to drink once in a while. So I would carry single malt, okay? Like, ये ना लाया कर यार. ब्लैक लेबल ही ठीक है, मेरे दोस्तों के लिए वही ठीक है. My friends don't deserve this. a Lafroy. They deserve a black label ला दिया अगर. वो भी गुड़गांव से ना सस्ती है. ड्यूटी से मत लाना. Like single malt तेरे को लावांगे उत्थे पी लांगे. We'll come and we'll drink at your place. यहाँ जरूरत नहीं है. आर्ग्यूमेंट्स तो बस दो चीज़ों पे होती है. तो फर्स्ट इज एज आई सेड हेल्थ. उनको मुझे वो जो कंसल्ट करना पड़ता है जो भी ना कि ये करना है वो करना है, ये मत करो वो मत करो, क्योंकि उनकी जो पैटर्न सेट हो गए ना कि शाम को चाय पीनी है, फिर उसके बाद वो थोड़ा सा नमकीन कुछ खाना है. मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साथ होता है बिकॉज वी स्टे सेपरेटली, लाइक वो वहाँ पे अम्बरनाथ में रहता है, मैं थाने में रहता हूँ, तो मिलना बहुत कम होता है. तो डेली वी सी देम नाउ, फोन पे डेली बातें होती हैं. तो आते क्यों नहीं हो तुम लोग यहाँ पे, बिकॉज बहुत रेगुलरली जाना आना होता नहीं है. तो अभी बच्चों के भी स्कूल्स है, मॉर्निंग में स्कूल्स है, ये वो. अब मैं उनको कैसे एक्सप्लेन करूँ कि उनको लगता है ठीक है तो ना कुछ क्लिनिक में तो घर पे तो बैठा और कर क्या रहा है. कर कभी जो भी. My last major issue in between was when my mother has had a knee problem for a while. तो अब उनको मुंबई आना है, आ नहीं रहे, ठीक है कि इतना एयरपोर्ट पे चलना पड़ेगा. एक तो they do not accept that they are aging. Yeah. And their health is changing. Yeah. So it took a lot of convincing for me to say that I'll book a wheelchair for you. Take the wheelchair because she doesn't want to sit on a wheelchair. And she can't drag her legs for a kilometer and a half inside the airport. बड़ी मुश्किल हमने करवाई. And when they took the wheelchair, my dad was so happy. कहते यार इतना बढ़िया रहा, हम आराम से आ गए. And my mother was also okay. And हमने, क्योंकि फिर वो व्हीलचेयर पे होता है तो तुम्हारे वो उसके थ्रू वो बिजनेस क्लास वाली साइड से ले जाते हैं, ठीक है. तो सिक्योरिटी चेक में भी टाइम नहीं लगा और वो बिल्कुल गेट तक. तुम तो पेरेंट्स को बिजनेस क्लास नहीं भेजता है. विद इन इंडिया तो सर मैं भी नहीं अपने खर्चे में बिजनेस क्लास. that is one thing. So my mom recently got a hearing aid. And she had been saying, there's a problem with the hearing, there's a problem with the hearing. And my brother kept saying, why don't you try a hearing aid? Why don't you try a hearing aid? And she did. And because a hearing aid is that kind of thing, is that once you start, your hearing becomes clear, because your balance is, the balance of your body is maintained by the cochlear, this thing in your ear. She's like, Aarti, my balance has improved. She's like, because otherwise you'd be leaning in to listen to stuff or whatever. It's like suddenly I'm finding myself walking straight. I'm like, जूते ठीक कर लो तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन वो नहीं सुनना. And the thing is, after she put that in, I was stunned because she's like, I have changed at least 10 people's lives by being that person who's like, lay low. Lay low, you can hardly see it. It's a thin wire like that, which comes above the ear. Nobody can tell you're wearing it. It takes a bit of getting used to in like 2 weeks or whatever. She's like, but it has changed my life. Yeah. And so she's a big advocate of like, just make whatever you can do to make your life easier and, your body healthier to just live. मेरे मम्मी को 2 साल लगे hearing aid खरीदने के बीच में और पहनने तक 2 साल लगे. And she's also one of those person जो उस कमरे में कभी नहीं होते जिस कमरे में उनका फोन होता है. Yeah.
कभी नहीं उठाना फोन उन्होंने, कभी नहीं। 15 रिंग बज गई है, फिर डैडी को फोन करो, फिर डैडी कहेंगे हाँ तेरी माँ दूसरे कमरे में है। इट्स why are the mothers never in the same room as their phone? Sir, second पर्ची। What is the best gift you've given to your parents and how did they react? Anybody else want to start? Let me think. I guess the best gift I have given to my mom is by being at the shoot for 6 hours, so that she doesn't have to have me in the house for 6 hours. I think that is the best gift I can give that lady. I remember I gave my mom a good sari. हाँ वो हुआ था जब आई थिंक डेंटिस्ट्री पास होने के बाद, जब मैं उस वर्किंग तो इंटर्नशिप्स होती, इंटर्नशिप के बाद भी आप जब लोकम वोकम करते हो, तो मैं थाने में था तो वहाँ पे मैंने किया काम, एंड ऑन अ बर्थडे गिफ्ट, एंड इवन शी रिमेंबर्स इट वाज आई रिमेंबर इट्स अ नाइस ब्लैक साड़ी, वो उनको दिया था। तूने चूज की थी खुद? हाँ मैंने खुद चूज की थी, मैं उनको दिया था, एंड शी लव्ड इट। एंड फॉर माय फादर, आई मीन आई सेड टू माय फादर इज वेरी वेरी कूल, उनको अब छोटी से छोटी चीज भी दो, बड़ी भी, वो पूछेंगे नहीं कितने की क्या है, बट ही लव्स इट। आप उनको ही जस्ट लव्स गिफ्ट्स, कि मुझे गिफ्ट दो, ही इज जस्ट लाइक अ किड। उनको तो मैंने उनको घड़ी भी दी, उनको वो कारमा भी दी, ही लाइक्स दैट, यानी ही वेट्स कि अच्छा इस बर्थडे पे क्या देगा करके ऑलवेज। तो अच्छा लगता है उनको। So first of all, like my dad stopped traveling, now he can't move much, but when he used to when he had to go out to travel, I saw that he went by business class, so that, you know, there's thing of sitting on the front seat, and more that front seat is that the toilet is accessible, because at this stage they need to go to the washroom very often. So that was one thing. And second thing, which when my mom passed away last year, but last 4-5 months was very terrible for her in health wise, was just deteriorating. I saw to it that we gave the best medical care available. Could be the nurse at home and ICU at home, the best medical treatment, and I think that's very important. Sometimes we spend on all these things, but see that final stages that they should, you know, have absolutely the best care taken. It could be 2 nurses at home, you know, proper staff to help her, 24/7 staff, proper air-conditioned room with a hospital bed. So we did all that possible. My dad is still going through that, so I've seen that we have like good stuff, and I think that's very, very critical. The last phase is very, very important. You know, they should go away in a very peaceful manner rather than struggling, you know, or, you know, because उनको पता नहीं खर्चों का क्या है, you know, and आजकल खर्चे in terms of medical care have just skyrocketed, and I think it's better to invest in that rather than, you know, I don't know, monetary things maybe. Yeah. Dude, It all depends on everybody's stage in life. Yeah. Right now, my parents are at their stage. I mean, my dad. Whenever I give my mother a gift, my brother gives my mother a gift, we gave her that massager. Okay, we gave her that foot thing and all. She had it for a day, and then she gave it to somebody else. She gifted it to somebody else, dude. She can't hang on to a gift. She can't hang on to a gift. Anything nice will go to somebody else. हमारे लिए कारवा का मारवा और आदिवास का आदिडास का आदिवास रहेगा, लेकिन she just gives away all the nice gifts. She's like किसी और को दे दो. हमारा वही रिटर्न का क्या था, पहली बार मैं जॉब करी, पहली सैलरी मिली, आई बॉट अ साड़ी फॉर माई मॉम, शी वेंट बैक एंड गॉट द साड़ी चेंज। कि इस टाइप के प्रिंट में ना मेरे पास ऑलरेडी है, 4 है, हाँ. ठीक है। देन व्हाट हैपेंड वाज, यू नो, व्हेन वी वर मैरिड, वी गॉट मैरिड, 3-4 महीने बाद माय फादर वाज लाइक कि सोनल तू घर पे बैठी कुछ काम तो कर ले, ठीक है। सो ही पुश्ड हर टू टेक द इंश्योरेंस का एग्जाम, वो जो एजेंट का, एंड पुश्ड हर टू यू नो बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। फिर वो पहले ही घर में जो 3-4 इंश्योरेंस होती वो करी, एंड सोनल वॉज वेरी हैप्पी दैट, यू नो, डैडी ने मेरे को पुश करा, मैं कुछ कर रही हूँ। एंड जब वो पहला वो उसका आया ना चेक वेक, जो भी कमीशन का, she wanted to buy something, so we went and we bought a Ray-Ban sunglasses for him. 3,000 रुपए के उस टाइम तो काफ़ी महंगा होता, 3,000। दिस इज 2001 और 2002, नहीं 2003। एंड माई डैड वेंट बैक, ही न्यू द शॉपकीपर, उसको ग्लासेस वापस करे और 3,000 रुपए लेके आ गए। Amazing. एंड लाइक वी वर कि क्या है यार, मतलब Amazing. This is amazing. ये बहुत सही था। then 3,000 एफडी में डाले होंगे, अभी उसके आज 4 लाख हो गए होंगे। सोच देखो आप यार। But it's like it becomes a little tough, but now it has changed. Now it has changed a lot. I think
And another, like, I have gift stories, but like best is very tough to say. We've taken them out for vacations. We took them to Yeah. Singapore. We took them to, Goa once. But otherwise, I think one of the other things was we bought a really nice watch for my mother. And उन्होंने इतने प्यार से रखी, अलमारी में अपने रखी थी. हमारी एक काम वाली थी, वो चोरी करके ले गई. Oh God. And she's every time we go there, वो घड़ी तुमने इतनी सुंदर मुझे दी थी. अरे दूसरी लाके दे I'm भाई. telling you 100% she has gifted it to somebody else. This is, I am telling you with confidence. Because the way anything you bring her, waste of money, waste of money, waste of money. हाँ, I'm वो like, तो- what is waste of money? Take it, no. Parents are crazy, dude. अब हमारे पास और मदर्स का प्रॉब्लम पता है क्या, लाइक एटलीस्ट इन माय होम विद माय मदर द थिंग इज शी इज कोई शौक ही नहीं है, Yeah. कोई शौक ही नहीं है. ठीक है, तो हमें समझ में नहीं आ क्या क्या लेके जाए. तो अब हमारा एक स्टैंडर्ड है कि एक काला या एक ब्राउन, इन दोनों में से एक कलर का अच्छे से ब्रांड का पर्स दे देंगे. कहीं जाएंगे वहाँ पर्स लेके आ जाओ. हाँ ये सुंदर है, इसमें मेरा फोन भी आ जाएगा, चश्मा भी आ जाएगा, इसमें ये आ जाएगा. That's यार डैडी के साथ विस्की बेस्ट. Best. सुमित तू उठा. Oh, how hard was it moving away from your parents? Oh, actually इतना hard हुआ नहीं था, because it was quite gradual. मतलब वो धीरे 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 हुआ. ऐसा कुछ मेरे लिए तो frankly hard था नहीं. ग्रेजुअल कैसे मतलब? नहीं, because see actually शादी के बाद भी तो वहीं पे जब मेरे बच्चे 1 साल के हो गए, हाँ. ओके, उसके बाद हम लोग मूव आउट है. लेकिन ये भी था बिकॉज क्या है कि मैं क्लिनिक के लिए अंबरनाथ से थाने आता ही था. हाँ. ओके, तो मेरी वाइफ भी आती थी, तो वैसे था ही कि हम जाना है करके. एंड तो इट वाज नॉट वेरी हार्ड फॉर मी. एंड अगेन एज आई सेड कि इट्स लाइक नियर बाय थाने अंबर. इट इज नॉट लाइक फॉर यू लाइक इट्स लाइक दिल्ली मुंबई है, तो फॉर इट इज लाइक कि थाना अंबर ठीक है तो चलता है. तो इट वाज नॉट डिफिकल्ट. Not There's a little bit of parents, but my daughter moved away when she went to study to the UK. So I'm talking from a parent perspective. So initially, obviously, it's tough when the children suddenly go away. But I think technology right now is pretty good. You know, we have Every day you WhatsApp feel group है, connected बातें enough. कर रहे हैं, Yeah. phone करो, video call करो, ये Video करो, calls वो हो रहे हैं, करो. हाँ. You know, apps are there. You can actually sit and track here where your child is if you want to. You know, all those apps and all are there. We don't have those apps, but I'm just saying that I think it's become fairly this, and I've always said with my parents, you know. for us it was Yeah. tough. It was tough because like we lived together till my kids were in 6th 7th grade. Like एक ही घर है, ग्राउंड फ्लोर पे वो थे, फर्स्ट फ्लोर पे हम थे. ठीक है, सेकंड फ्लोर हमने किराए पे दिया हुआ था. तो when we were supposed to move it was like not that easy. Yeah, I can imagine. We had to tell them कि आप भी तो मूव करे थे यार, अब हमारा काम है तो हम क्या करें. Where did your parents move from? Where? That's rough. They moved from Patiala to Chandigarh, like you Okay, know, okay. family वहाँ थी, Yeah, पटियाला from में then to थी. Delhi. And फिर father की job चंडीगढ़ लगी तो वो चंडीगढ़ मूव करे, and then they would travel every week to Patiala, Saturday, Sunday. That was the thing because my father was also the eldest brother, you know, so to a lot of responsibilities of home. After that we moved to Delhi. तब तक तो खैर like मेरे दादी भी हमारे साथ ही थे. तो but अब beyond a point, like we had that discussion. It took them a while, but fortunately, एक तो ये है कि अब my father and my mother they have their own circle there. Yeah, they don't do So they're fairly Yeah, busy yeah. with that. Yeah. You should never break that. हाँ हाँ तो वो नहीं तोड़ना चाहिए. Although we've told them sometimes because now they have some friends here in Mumbai, our society also, because when they were come in WhatsApp group तो बनी गए इनके. हाँ. तो वो इन्होंने कर लिया है. But they can't move away from you know Delhi. It took a while for us to like you know figure this out कि कैसे करेंगे. In fact, they kept the first floor empty for 4-5 months. कि जब भी आएंगे बच्चे तो आराम से रुक सके. एंड देन दे रियलाइज बच्चे नहीं आ रहे, चूहे आ रहे हैं, छिपकली आ रही है, एंड घर खाली रखेंगे तो मेंटेन नहीं होगा. तो उन्होंने फिर बाद में किराए पे दिया. Good. But yes, in the beginning it was you know I think first 6-7 months were fairly tough you know for them. My son also was like very emotionally connected. So my son especially was more like कि
अब दादा दादी और नानी क्या करेंगे, क्योंकि नानी का घर भी पास उसकी में था। गर्लफ्रेंड होगी उधर दिल्ली में। दादा दादी तो सब बहाना था। आई रिमेम्बर कि जब हम लोग शिफ्ट हो रहे थे तो मतलब पहले ऐसे था कि व्हेन किड्स वन होते तो 2014 में हम लोग ही शिफ्ट हो गए थे टू थाने एंड शिफ्ट हो गए थे तो एक ही दिन हुआ था हमने रेंट आउट किया था फ्लैट, एक ही दिन हुआ था और एक दिन में जैसे पता नहीं वो हो गया। नेक्स्ट डे माय वाइफ आई डोंट नो शी वाज नॉट फीलिंग वेल और शी स्टार्टेड मिसिंग मतलब घर इन लॉस का घर हमारा घर एंड सडनली नेक्स्ट डे पता नहीं क्या होगा शी लेकिन नहीं बस जाना है तो हम लोग आए शिफ्ट हुए नेक्स्ट डे वापस चले गए वहाँ पे Missing the food. हाँ पता नहीं शी वेंट देयर आई रिमेम्बर माय वाइफ वाज नॉट फीलिंग वेल शी सेड कि द मोमेंट यू नो एंड मुझे मेरी कुछ रिकॉर्डिंग थी तभी तो मैं रिकॉर्डिंग के लिए गया था तो माय फादर केम टू उसको पिकअप करने के लिए तो फादर लेके गए मेरी वाइफ को एंड गए द मोमेंट शी एंटर्ड शी सेड द मोमेंट आई एंटर्ड दैट you know complex you're like it's home you know like, back you know गई and she went and मेरी you know माँ को एकदम जल्दी से हग वग दिया एकदम you know साथ एकदम खुशी हुई इसको ये वो बस तभी था So sweet, dude. so that was like I believe my mother is my soulmate, and I am put on this earth to basically tell the world how amazing she is. And so I will never, I think, like, I mean, she's been my roommate and my soulmate my whole life. And in fact, I think I really enjoy living with my parents. I really, in fact, my family and stuff. I'm a big, when I go to the US, okay, so I'm planning to go, by the way, everyone, I'm going to be doing some shows in the US I'm planning to go in January, February, March, and like, you know, do auditions and clubs and all over there. And my brother lives there. And he lives in New Jersey, which is a little distance from New York. And, you know, everyone was like, oh, so when you're going to go to New York, you know, you're going to get an apartment in the city. And I said, absolutely not. I will be living with my brother. And I'm telling you, all my American friends' minds have exploded. What are you doing? What a loser. You know, you have to stay by yourself and be independent. And I agree, you have to be independent. And I can be independent in my brother's house. Thanks. I will do that. I love living with family. I don't agree with that whole new structure of, you know, staying away from your parents being the cool thing is something that I don't agree with, you know. You can be cool and still live with your parents. Yeah, अगर that's same शहर है, एक साथ वाले कमरे में तुम रह रहे हो, तुमको सारी आज़ादी घर वालों ने दे रखी है, then just to move out because it is cool. And they are also the best babysitters. They are the best I babysitters. mean, that, yeah. They are the best babysitters. They are like, you know, there's always somebody At home, yeah, to take care. that you go back to, and it's such a comforting feeling, Yeah. you know, कि मैं घर जाऊँ, घर खाली नहीं है, Yeah. Yeah. ठीक है, घर खाली नहीं है, मैं कहीं जा रहा हूँ जहाँ पे, और मेरे हिसाब से मतलब, you know, I don't know about other people, I think in your life तुम्हें चाहिए कोई जो तुम्हारे नखरे उठा सके, बेमतलब के नखरे उठा सके, और तुम्हें कोई ऐसा भी चाहिए जिसके तुम बेमतलब के नखरे उठाओ. Yeah. Yeah. And that brings the flavor in your life. It like somehow I feel that, you know, that adds some meaning to my life. कि कोई है जो फालतू की जिद भी करेगा तो मैं पूरी करूँगा. Yeah. ठीक है? Yeah. Without getting into the logic, या ये क्यों करना है या करना है, अब करना है तो करना है, Yeah. कि ये तो चाहिए. और if I like when I go back home and I'm in Delhi, मतलब कि अच्छा मम्मी ये भी बना दो, अच्छा मम्मी वो कर दो, अच्छा मम्मी ये कर दो, you know, and sometimes it's, you know, it takes her a little more effort, but she would be hurt more if I don't ask her and I say कि मैं बाहर से खा के आया हूँ. Yeah. That would hurt her way more. खाने का तो बहुत होता है यार. हैं? खाने का बाहर खाने का. हाँ. खाना खा के जाओ, खाने का क्यों? टाइम हुआ है. हाँ, That खाना is a very big घर का thing. खाना भी नहीं तूने खाना, मैं दाल, and even if you the point is, मैं बाहर भी खा रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ मम्मी डिनर करके आ रहा हूँ, अच्छा मैं दाल बना के रख रही हूँ तेरी. Yeah. Just in case. नहा लेना. Yeah. वापस आके नहा लेना. So, you know, they want to do that, they want to ensure कि हाँ सब कुछ ठीक है, मतलब, and it's so, sometimes it's annoying when, you know, I go there, there's a room where I stay, मैं सारा सामान अपना निकालूंगा, सब कुछ अपना तैयार होकर फटाफट निकलता, बंदा सारा कुछ वहीं पड़ा हुआ, जीन्स वहाँ पड़ी है, सामान जुराब, मैं वापस आऊँ सारा कमरा समेटा पड़ा है,
Yeah. अब मुझे पता ही नहीं जुराबे कहाँ है, yeah. रुमाल कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, मम्मी कहाँ रख दिया, वो मैंने सारा इकट्ठा करके ना अलमारी में रख दिया, तो बिल्कुल बिखेर के, मैं को बिखेर के मैंने रखा था कि मैं सुबह ही Yeah. I knew the method to this madness. हाँ. I don't know the method or the madness. That's उनका केयरिंग नेचर. वो कितने भी आप बड़े बन जाओ, कितने भी आप पैसे कमाओ, स्टिल दे विल आस्क यू लाइक कि पैसे चाहिए, पैसे, हाँ कुछ आपको कुछ ये इस बार ठीक है, मतलब चल रहा है, मतलब अभी 3 जो भी अपना जो आता बीच में शोज नहीं चल रहे हैं कुछ ना, हाँ क्या चल रहा है अभी, क्या चल रहा है आज, क्या चल रहा है अभी, कहाँ गए, कुछ सुना ही नहीं दिया उनको, एक मतलब पता नहीं चल रहा कि 1 महीने से कुछ है, हाँ तो भेजो कुछ चाहिए, कुछ ये आता है उनकी तरफ से, हाँ. कितना भी बोले थे नहीं इट्स ओके. Dude, I was leaving here. She woke up from her sleep. I said, bye, mummy. She's like, listen, you need money or what? I said, mummy, I'm going like here only. I'll take Uber. Oh, अच्छा ठीक है. And she went back to sleep. But that like, तुम्हें पैसों की जरूरत है. नहीं, With you also, ना, it happened. सही में मैं अमित की शो पे जा रहा हूँ, वहाँ से पैसे मिलने वाले. Yeah. अमित की यारी में बहुत पेमेंट है. 4 यारी में. that happened with me during COVID when my dad was like तेरे को कुछ जरूरत तो नहीं है, पैसों की जरूरत है तो मुझे बता दियो मैं कर, लाइक नहीं डैडी अब तो आपको अब तो नहीं. So cute. But it's so cute that even at this age, it's like even when like he's at home, he's still earning some money, touch wood, but he still feels के जरूरत पड़ेगी तो you know won't be any. मुझे उनका नंबर दे देना कभी. Uncle. And on all my अमित का friend बोल रहा हूँ. videos, I'll tell you, on all my videos, किसको जरूरत नहीं है साले को. जितने भी वीडियोस में डालता हूँ, every video there is a comment of my parents. Every video there is a comment That's so everywhere. sweet. हाँ कुछ भी डाल, कुछ समझा नहीं समझा तो क्या किया, जो भी है क्या Very समझा, good. जो भी, but every video you will see there is a comment of my mother and my father. They will always comment. मेरे Oh, पेरेंट्स that's को तो वही रहता है कि ये तो gorgeous. शो Every टू video शो, Gorgeous. शो टू शो पैसे आते हैं तो कहीं ऊपर नीचे हुए, अगर तेरा चलना बंद हो गया, तेरे को शोज आ रहे बंद, सो देन वन डे आई टोल्ड देम कि देखो मेरे को ना यूट्यूब से भी कुछ पैसे आते हैं, वो आते ही रहेंगे. एंड दैट वाज लाइक अच्छा वो आते रहेंगे. मैं कहा हाँ मैं नहीं भी करूँगा तो जो एग्जिस्टिंग वीडियोस लोग देखते हैं ना तो उससे मुझे महीने के थोड़े पैसे आते हैं. अच्छा एक बंधा हुआ है ना है ना, कुछ, बस, हाँ, कि बांध के रखे, एक रेंट है. it made them so happy EMI that there is a small amount that is consistent house, in my yeah. life is what made them happy. Which means you should guys like, share and subscribe. Subscribe. Like, All share, our and YouTube subscribe. channels. All the YouTube channels. Yeah, Aditi yeah. Mittal, 1/2, Atul Khatri. And Sumesh. हाँ, सुमेध शिंदे, you have a YouTube channel also? इसकी रील्स वैसे ही तुम देख चुके हो 50 लाख बहुत बार. पैसे कमाते हैं. हाँ, इसका शॉर्ट्स और वो सब देख चुके हो. ठीक है, करो नहीं करो. Book him for corporate shows. Follow him on Instagram. Okay. And Amit Tandon is touring US. US, yeah. Yeah, so please. All tickets are sold out. No need to buy. Thank you guys. Great. Thank you. Thank you. अरे फिर से आ गया